Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well. So today's video is a Sarojini Nagar winter haul video 2018. I hope you have checked my Sarojini Nagar in winters 2018 video too. If you haven't checked that already, I will give you the link in the description box. Do check that out. Now let's get started with today's video because I have a lot of things to show to you. So the first thing that I got is this royal blue colored t-shirt in full sleeves. So this is how it looks like. It is full in sleeves, very thin material, but appropriate when it's not too cold. So yeah, that's the first purchase. I got this in two colors. One is in this royal blue and another one is in black. The guy had this whole round hanger in which he had different colored of these kind of t-shirts in different color, and he had different sizes too. So I loved it, and these were just for 100 rupees each. Yes, 100 rupees. So this is the first purchase. Then I got another t-shirt, which is this one. This one is in stripes and red and grey, maroon and grey to be specific, and it is again in full sleeves. It is not actually full sleeves, it is like 3/4 sleeves, but I loved it. I think I will be wearing it underneath my jacket. So yeah, that's the second purchase. This was again for just 100 rupees. You have a lot of options for just 100 rupees, so you can definitely visit Sarojini if you want these kind of t-shirts. Even sweaters were for 100 rupees, but I didn't get any sweater for 100 rupees because I'm not sure if they are first hand or second hand, so that's why. But if you can wear second hand clothes, then you can definitely get them. Then we got some lowers. So first of all, my mom got this black colored leggings. I love the material of this. This is a really nice material, and it is really woolen, काफी warm hai ye. And this was just for 200 rupees, and the shopkeeper gave us a card. This is very rare. You don't really get the shop cards at Sarojini, but he gave us that. I will show you in a while. We got one more leggings, which is for me from that store only. So this is that legging. I absolutely love the color of this, but it is really tight fitted for me. I thought that it will be little bit like open, like broader, but it is really tight fitted. But that's the only thing that I don't like, but still it's like okay. It's really warm, so I like it. This was again for just 200 rupees. I also got one more pajama from that shop only, which is this. This is a really cozy blanket kind of a material. I absolutely love it. Look how cute this looks. This has these clouds all over it. I really like the color of this pajama, and this is so soft. I can't even tell you, this is so soft. I love it. When I wear it, I was just like jumping everywhere in my house. This was so cute. This is so really cute. You will get a lot of colors in these kind of pajamas. In Delhi you can get these kind of pajamas anywhere. They are like so famous these days. This was again for just 200 rupees. Now they had these kind of pajamas for 100 rupees too, but they were not really good in quality. बहुत अच्छे से वो थे भी नहीं, उनके colors और variety भी अच्छी नहीं थी. So I got this one, which was for 200 rupees. Then I got this woolen shrug in this beautiful olive color. Again something I loved. So this is how it looks like. It's like really long, and बहुत पसंद आया मुझे. This was available in different colors again. Black में था ये, orangish pink color में भी था. So I was confused between two colors, but then I went with this olive color. I think this is really pretty, and I can imagine me wearing this. So yeah, I love this. This was for 250 rupees, and I didn't bargain because the shopkeeper was so sweet that I just couldn't bargain. I said okay, le lo 250 rupees. So yeah. Then what did I get next? Okay, so then I got some cloth pieces from a proper store at Sarojini Nagar. So there are also proper shops at Sarojini Nagar. They are not like only stalls at Sarojini Nagar. You will get some branded shops also, and some good quality shops also. So there was this one shop in that Bata Lane where they will give you like all kind of brands in one shop, like Monte Carlo, Duke and everything. So I got 4 to 5 things from that shop. Now these are comparatively expensive because like they are good in quality, और वो जो रोड पे जो बेचते हैं वो वाली चीज़ नहीं है. तो अगर मैं कहूँगी कि मैंने 1500 की जैकेट ली, तो कोई मुझे कहेगा कि भाई क्या हो गया, सरोजनी से 1500 रुपए की जैकेट, क्योंकि 1500 रुपए में यू विल गेट 3 जैकेट्स एट सरोजनी, बट आई गॉट 1 बिकॉज ये प्रॉपर स्टोर्स है. तो सरोजनी में यू कैन गेट प्रॉपर स्टोर्स एज वेल. So this is that jacket.
तो ये है 150 रुपीज़ की. नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर जैकेट, बट दिस इज अ कॉटन काइंड ऑफ अ जैकेट. आई थिंक लाइक अ स्वेट शर्ट मे बी. सो ये मुझे बहुत पसंद आई. ब्लू कलर में है ये, एंड इसमें आगे ये बटन्स हैं, तो मुझे मतलब काफ़ी कंफर्टेबल रहता है. जस्ट इसे खोलो और पहन लो. चेन के साथ ये नहीं कि उसे लगाना है फिर उसे ऊपर करना है. सो दिस इज़ लाइक रियली कन्वीनियंट. मुझे इसका आगे का ये डिज़ाइन भी बहुत पसंद है. एंड काफ़ी वार्म भी है ये. मोस्टली जब नवंबर होता है या फरवरी मार्च होते हैं तो तब के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है ये. सो दिस वॉज फॉर 1500 रुपीज़. देन आई गॉट दिस ब्लैक स्वेटर विच इज़ लॉन्ग. So and I was not having any black color sweater, and this is like really versatile kind of sweater. कैसे भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो एंड अंदर भी पहन सकते हो जैकेट के. सो आई वांटेड वन. तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टाइट है, बट ओके. ये था कुछ 600 रुपीज़ का. सो दिस इज द नेक्स्ट परचेज. आपको 100 रुपीज़ के स्वेटर भी बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे. सो इन केस यू वांट दैट. फिर मैंने खरीदी स्कीवी. इसका कलर बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. ये भी थोड़ी सी लॉन्ग है. आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर इसकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट होती, बट स्टिल ओके. इस तरह की स्कीवीज भी आपको सरोजनी में सिर्फ 100 रुपीज़ ईच के मिल जाएंगी, पर उनकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं होती. मुझे थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली चाहिए थी. दैट्स व्हाई आई गॉट दिस फ्रॉम अ प्रॉपर शॉप. दिस वॉज फॉर 400 रुपीज़. अदरवाइज यू कैन गेट इट फॉर 100 रुपीज़ ऑल्सो, कम अच्छी क्वालिटी में. फिर आई गॉट दिस वन. ये तो अच्छी सी वॉर्म्स की भी है, तो ये तो ऐसी है कि यू जस्ट नीड टू वेयर दिस एंड अ जैकेट ओवर इट एंड यू आर डन. सो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है इन रॉयल ब्लू. ये है प्रॉपर ब्रांड ऑसवाल, तो सबको पता ही है हमें. दिस इज द मोस्ट फेमस ब्रांड ऑफ वुलन क्लोथ्स. सो या दैट्स द नेक्स्ट परचेज. आई थिंक दिस वॉज समवेयर अराउंड 800 रुपीज़. सो या क्लोथ्स में तो यही था. उसके बाद नो, आई गॉट दिस स्टोल ऑल्सो. I got this pretty stole. Now, can you just appreciate the color of this? This is such a pretty color. I mean, just look at this. कितना प्यारा कलर है इसका, and it has a shine to it. And ये डबल है, like you can wear it like this too. तो ये साइड थोड़ा सा डार्क है and ये वाला बेबी पिंक है. And it also has these beads at the end. And this was just for 150 rupees. Yes, you can get a lot of variety of stoles there just for 150 and 100 rupees. And this is just so pretty. I just love it. Can't really wait to style it. बहुत ही pretty है ये. Just for 150 rupees. And I got a similar stole for I think 800 rupees. Kind of similar. थोड़ी तो variety में difference होगा, but ठीक है. उसके बाद I got this woolen cap, which was for I think 130 rupees. So this is for my brother. This is a beanie and it matches my sweater. So let me just wear it. Okay, so how do I look? I think I look good. So this was just for 130 rupees. I love it. I think I should keep it for myself, or should I give it to him? I don't know. This was for 130 rupees. You will get a lot of colors in these kind of caps too. उसके बाद मैंने ली ये belt, which is just for 100 rupees. Again, you will get belts for 50 rupees also. वो घूमते रहते हैं रोड पे, जब भी आप जा रहे हो वो पूछेंगे मैडम बेल्ट चाहिए, मैडम बैग चाहिए, मैडम ये चाहिए, मैडम वो चाहिए. तो उसमें बेल्ट वाले बहुत पीछे पड़ जाते हैं. वो पीछे घूमते रहेंगे, हम पूछ रहेंगे मैडम बेल्ट चाहिए, मैडम बेल्ट चाहिए. बट उनसे मत लेना, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती. प्रॉपर स्टोर से लेना. सो दिस वॉज जस्ट फॉर 100 रुपीज़. और बेल्ट की तो मैं क्या ही बात बताऊँ, उसकी क्वालिटी वगैरह सब ठीक ही है. उसके बाद आई गॉट दीज सॉक्स, एंकल लेंथ सॉक्स फॉर माई ब्रदर जस्ट फॉर 30 रुपीज़. कॉटन के हैं, बिकॉज हम अभी एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए कॉटन की सॉक्स चाहिए थे एंकल लेंथ. आई जस्ट लव इट. तो ये भी 30 रुपीज़ का है. उसके बाद वी गॉट दीज 3 पेयर ऑफ सॉक्स. तो इस पे लिखा है 185 रुपीज़, बट वी गॉट दीज 3 पेयर ऑफ सॉक्स जस्ट फॉर 100 रुपीज़. एंड इसके कलर्स सही हैं. ये मॉम के हैं मेरे, ये वुलन सॉक्स. सो या दैट्स दैट. उसके बाद वी जस्ट रैंडमली गॉट दिस सिजर्स जस्ट फॉर 20 रुपीज़. तो वहाँ पे एक ही लेडी बैठी हुई थी, बोल रही थी कुछ ले लो कुछ ले लो. सो वी गॉट दिस सिजर्स. उसके बाद आई गॉट दीज रियली प्रिटी ईयरिंग्स. आई जस्ट लव देम एंड कांट वेट टू वेयर देम. दिस वॉज जस्ट फॉर 50 रुपीज़. ये 30 रुपीज़ में भी थे, पर उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी. थोड़ा छोटा साइज भी था उनका. एंड दीज वर फॉर 50 रुपीज़. इसमें गोल्डन कलर भी अवेलेबल था, मुझे बहुत पसंद आया.
फिर I got these pair of hoops from one store which was just for 30 rupees. I don't understand why people get these hoops for 300 rupees from H&M and Zara or Forever. I don't understand why they get these hoops from such shops when you can just find it for 30 rupees at Sarojini. So yeah, I got this just for 30 rupees. Then I got these cute tops. कुछ स्पेशल नहीं है बट क्यूट लगे मुझे एंड दिस वाज जस्ट फॉर 10 रुपीज सो आई गॉट देम. मुझे नहीं पता मैंने पहनने वाली हूँ नहीं. आई जस्ट परचेज देम एंड आई जस्ट कीप देम. आई डोंट इवन वेयर देम बट आई गॉट इट. मे बी आई विल वेयर देम. देन द लास्ट परचेज, नो सेकेंड लास्ट, इज दिस लेयर्ड ब्रेसलेट. सो आई ऑल्सो लव दिस. I have one more which is in like greenish blue color and this one is like white, golden and silver. So this one was for 30 rupees and it will look really pretty if you will style it properly. And the last purchase are these 200 rupees bellies for my mom. तो इस पे यहाँ पे सामने बो लगा हुआ है. Nothing like really special about them. पर ये वो बोल रही थी काफी comfortable है. तो हुआ ये था कि उनके जो shoes थे वो इस शॉप के सामने टूट गए थे. उप्स. तो उस शॉप के सामने टूट गए थे. तो सामने ये शॉप थी 200 रुपीज वाली जिसमें सारे फुटवेयर वर जस्ट फॉर 200 रुपीज. सो वी क्विकली गॉट वन. So yeah, that's the last purchase and with that my Sarojini Nagar haul is over. So I got a lot of things and I love each one of them like always. I hope you enjoyed watching this video. If you did, then please subscribe to my channel, give this video a big thumbs up, share this video with your friends and do tell me in the comment section which was your favorite product out of everything that I purchased this time. Thank you so much for watching. Until next time, bye. Take care.